where obviously there was a search done and there were things found inside the school, and obviously that issue, it raised many questions. There was condemnation, and also there was some conversation that maybe this is a result of, having sex education in school, and, students have gone astray. So if any one of you all, Satish ji and Rakul ji, would you like to, add your two bit on it? There was an incident in a Bangalore school where they were, stuff like condoms, used condoms, contraceptives, they were found in a Bangalore school. I think class 10, 8 to 10 students. So that obviously created quite a rage in the in news and on social media. Yes, when this kind of a revolution happens, something wrong also happens, and that is that kids at that age, how crime happens, it is how theft happens. So something is happening. What student they were doing, maybe I don't know about this news, but if they must have done this, they should be kind of a given punishment for that, because teaching sex education and defining it in a different level is a totally different thing. You can't take condoms in the school. That is wrong. But you have to learn about condoms and learn about sex. That is another thing, So I think I don't know what happened to the children. They were punished and what their parents were told, but they should have been treated normally, to tell them not to carry. It is like mobile phones nowadays, People, students are not allowed to take mobile phones in the school. So it is the same thing. It is the need. It is the need. They have to know about it. But you can't defy certain regulations which are needed for the school. That is, I think, that is रकुल only. यूथ सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा मेरा सवाल आपसे ये था कि फिल्म में तो बहुत कमाल का काम दिखा आपका, आप एजुकेट कर रही हैं लोगों को, लेकिन सही मायने में फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, एंटरटेनमेंट के लिए ही होती है, इनडायरेक्टली भले ही मैसेज दे रही हो, लेकिन यहाँ पे खुल के बात हुई सेक्स एजुकेशन को लेके, फिल्में भी हो रही है, लेकिन उतना मायने वो नहीं रखता, लोगों को फिल्म एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही लोग देखते हैं। पर्सनल लेवल पे आप क्या कभी किसी को गाइड करते हैं या फ्यूचर में किसी को एजुकेट करने के अपने फीमेल फैंस में ही या फ्रेंड सर्कल में, कभी पर्सनल लेवल पे, ये तो फिल्म और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रमोशन का दौर है, सिर्फ पर्सनल लेवल पे क्या आप पहले कभी किया है आपने कुछ या फ्यूचर में करेंगे, वो मायने रखता है ज़्यादा आपके लिए? कि पर्सनल लेवल पे किसी को सेक्स एड दिया है मैंने कि नहीं? नहीं किसी भी मामले में एजुकेट किया है? जी जी जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक हम लोग ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में मालूम है और कोई डिस्कशन चल रहा है तो आई विल टेल माय फ्रेंड्स और फैमिली और माय सिबलिंग दैट आई थिंक आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई थिंक यू शुड डू दिस, एंड दैट्स हाउ ह्यूमंस आर। आई मीन हम लोग सोसाइटी में ऐसे ही इवॉल्व होते हैं कि जब आप हेलो हेलो। वेट करना है ना, वेट करना है। आप Okay. बताइए, कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू। राकुल। या तो आई थिंक आपका सवाल मैंने मोस्टली आंसर कर दिया, दैट आई ऑलवेज बिलीव इन शेयरिंग वट एवर नॉलेज आई हैव, वट एवर टू द बेस्ट, एंड आई थिंक स्पेशली फॉर वेदर इट्स माई स्टाफ के बच्चे होते हैं जिनको हम आई एडुकेट दैम, और इफ दे हैव डाउट्स और इवन इफ दे हैव क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, इफ यू कैन हेल्प समवन, व्हाई नॉट? दैट्स ह्यूमैनिटी। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ऑफ कोर्स खुल के बात करूंगी। सी आई हैव टू बिलीव इन द सब्जेक्ट दैट आई एम पोर्ट्रेइंग, ऑल ऑफ अस हैव टू बिलीव इन इट। इफ वी शाई अवे फ्रॉम इट, then how are we being true to our subject? Rakul, hi, straight on. Hi. Rakul, I wanted to get to know your thoughts about sex being such a taboo topic in India in itself, but is it far more difficult for women to be expressive about it and to just be open with their partners, so open even in their family, in their in-laws, because right from inherently it has been more taboo. It's not considered women okay to see sex as a mode of pleasure, as bodily pleasure. Is that the inherent issue, that women do not see sex as pleasure and is considered a pleasure mode for men only? I think
like you said, that there is a taboo about conversation of sex, and that is largely because women are not even aware that they are empowered to have a right to speak. And that is what the film does. It creates awareness that it's a two-way street. It's not a one-way street. We're not in a hopefully not in a patriarchal society where only men command and demand and the women are supposed to listen to or follow orders. And that is what even the film says, that, you know, it's very important for both men and women to understand their needs, to be very vocal in a intimate relationship, in a personal relationship. And of course, women should have a voice and a choice of whatever they want to do. एक और सवाल है आपसे. This is your fifth release in 9 months. Runway 34, Katputli, Dr. G, Thank God, and now this. कैसे जगल कर पा रही हो आप? कैसे जगल कर पा रहे हैं? Yes. I think I'm a workaholic and I love working, and I'm just grateful कि you know, ये सब फिल्में मुझे करने का मौका मिला, and I just hope that this continues. मैं 360 days काम कर सकती हूँ, 366 days. एक आखिरी सवाल सतीश जी से. सतीश जी, आप यू आर द मोस्ट वेटरन ओवर हियर, और जैसे हमारे कमाल की एंकर ने कहा दैट वी हैव ऑल लव्ड यू फ्रॉम द टाइम यू अपीयर्ड ऑन स्क्रीन. लेकिन जो अपने यू हैव सीन हाउ द फिल्म इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स. Is it very refreshing? Is it something new? Is it almost feeling like a debutant कि आप आज ऐसी फिल्म में आप इतना कमाल का किरदार, you can act it, but earlier, even probably thinking about this, even probably writing the script, many actors would probably shy away from it, ये सोच के कि कौन देखेगा, लोग क्या बोलेंगे. Are you feeling that refreshment? Interesting question, because I think हर आदमी, हर एक्टर जो है वो ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता है. जैसे कि जब हम यंग होते हैं तो हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस लोगों से, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप यंगर जनरेशन से कुछ सीखें, और तभी आपकी ग्रोथ का पता चलता है. असल में आई एम इन ए मोड ऑफ लर्निंग अगेन. आई एम रेडी टू लर्न. आई एम ए ड्रामा स्टूडेंट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिल्म इंस्टीट्यूट. आई हैव डन ओवर 150 films. I have directed films. I have acted in plays. I have done television. I have done radio. I have done events. Everything I've done. I have written. I'm a writer. But till today, and now especially, I want to learn. So it is a very exciting period which is happening for me. And when I get a script like this, I get very excited, very moved, because that gives me promise and space to change myself and reinvent myself. And that is very important for an actor. And I'm going through the best phase when I read a script like this, which gives me immense scope. Or as a director, last year I directed a film, Kagaz, which did very well. So it is a reinventing period, that it is very necessary. It has been 40 years for me, more than 40 years in this film industry. But how I am working here and still standing here is because of your question, that I want to learn. I want to keep on learning. That is important. Thank you, Russell. Even if you might not remember my name, I remember yours. Come. उनके लिए तो सेफ सेक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उनके लिए तो ये फिल्म आई थिंक प्रॉमिस है ना, कि है जी, यही खुलासा है कि उनके लिए कॉन्डम जो है वो बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक आज की डेट में उनके पास वैसे ही काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसकी वजह से आई एम श्योर, और जितने भी लोग हैं जो सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, तो सबसे पहला पार्ट उन्हें यही पढ़ाते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप कॉन्डम्स का इंसिस्ट करें कॉन्डम्स के इस्तेमाल के लिए. तो ये है. आजकल तो उनके लिए मैंडेटरी हो गया असल में, कि आपको क्लाइंट कोई आता है तो कॉन्डोम तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सेफ सेक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ये बहुत बहुत ज़रूरी हो गया. जो हम किससे सुनते हैं, और एनजीओ से हम कई बार, कोई दोस्त हैं जो एनजीओ की वो बताते हैं, उसमें सबसे आता है कि जब इस तरह के इलाकों में जाता है, जिनको जो उनका वो बिजनेस है, उनका प्रोफेशन है, उनकी दाल रोटी है वो, लेकिन अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए
उनको ये सलाह दी जाती है जो कि हमारे फिल्म के अंदर बताई गई है कि आपको सेफ सेक्स जो है इवन दैट ज़रूरत चाहे आपकी रोजी रोटी है, और वो एनजीओज और संस्थाएं हमेशा करती रहती हैं। ये पढ़ने में भी आता है, और जितने एनजीओज के दोस्त लोग हैं हमारे, हम सबको बताते हैं कि हम जगह जगह जाके प्रोस्टिट्यूट्स को एक्चुअली ये सबक देते हैं और उनको शिक्षा देते हैं इस बात की। I want to ask Mr. Manish Kalra, There's 2 mics around there. Huh? Yes. how, so in the past, like ZEE5 has platform films like Helmet and Janhit Mein Jari. So how receptive is the audience towards such films? What has been the experience like? Like I said in the start, हम लोग real relatable stories करना चाहते हैं, तो काफ़ी ये stories जो हैं connected होती हैं लोगों से। मतलब when we talk to people on the ground who have faced issues with buying a condom, or who have faced issues as a woman kind of going through multiple pregnancies and all, so they connect with the society. One thing which we are realizing is कि जो taboo topics होते हैं उनको खुल के बात किया जाए तो बड़े जोर से connect होता है, मतलब attention seek होती है. So some of these films are actually really done very well on our platform, and we believe that if we go with social message like Satish ji was saying, वो entertainment के साथ काफी impact करता है society के लिए. तो we are like super excited to be a part of Chhatriwali. Thank you. Yes, we can hear you. Yes, go ahead. No, you started off saying hi, Tejas. Yeah, Continue your okay. question. Yeah. Now it's working. Yeah, just wanted to ask you, do you feel a film like Chhatriwala will actually bring in the social message and be a conversation starter for the masses here? We really hope so, because the intention is that. And with ZEE5, I think we'll reach out to a wider audience. And I think this subject is anyway, like everybody said, that it has been there, and a lot of people, they were not talking about it earlier, but now that we are making films on it, and the films are received very well, I'm hoping that this film also does the same thing, and we move one step forward, and people start openly talking about this subject. And I think taboo, it should be gone completely. I'm really hoping that. देश के बाहर मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है इस टॉपिक पे ज़्यादा लोगों से. भारत में ही ज़्यादा रहा है मेरा इंटरेक्शन इस टॉपिक में. पर मेरा ऐसा अनुमान है कि अपने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लोग शर्माते हैं इन चीज़ों से. बाहर जो है वो क्या है कि कई सारी चीज़ें जो अमूमन परिवारों में कॉमन होती है, जैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एक दूसरे को झप्पी पाना या एक फिजिकल कांटेक्ट जो है इवन माँ बाप और बच्चों के बीच में उतना प्रेवलेंट नहीं है. जैसे मेरी माँ और मेरे पिताजी बचपन से मुझे से झप्पी नहीं पा रहे थे. वो बाद में उन्होंने फिल्मों में और प्रीमियर पे देखा कि लोग हर आके पहले गले मिलते, तो आजकल मेरी माँ भी थोड़ा मुझे गले मिल रही है, पर पहले नहीं सालों से कभी गले मिलती थी मेरे. तो एक्चुअली क्या हम तो ग्रो कर रहे हैं. हाँ. हमारे फिल्मों के अंदर जब हीरो हीरोइन को पास आते लिप्स के पास आते थे ना, तो 2 फूल टकराते थे आपस के अंदर. तो 2 फूल टकराने से आज अब कहाँ से कहाँ गया है आप देख ही रहे हैं. हम लोग है नो किधर पहुंच गए हैं हम लोग और सीख गए हैं. तो अब उसके बारे में अगर वो सीख गए तो ये सीखना जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो तो बहुत बहुत ज़रूरी था. अब फूलों की ज़रूरत नहीं है, अब तो फूल्स की ज़रूरत है सर. आई थिंक वो लड़की का डायलॉग बिल्कुल सही था. बहुत आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू नोटिस दैट, एंड दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट फिल्म. जो कि गलती हुई थी उन बच्चों से, लेकिन उन्होंने अपना वर्जन दिया था. बट डेफिनेटली उनकी ना समझी थी वो, और वो समझ के लिए ये पिक्चर एक्चुअली उनको समझाने के लिए है कि ये बहुत ज़रूरी है. उस वक्त अगर वो सेफ सेक्स सोच लेती, अगर वो कंडोम की बात करती या अपना कुछ
ऐसा उनको सेफ्टी मेजर होता, तो एक्चुअली वो नहीं होता, उनसे गलती हुई और उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी असल में। तो दैट वाज दिस थिंग, बट उनकी अपनी पर्सनल लिबर्टी थी, पर्सनल फ्रीडम था। उस लड़की का था कि 18 आप क्या क्या कर सकते थे, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में पता था, पर वो तो ना समझी से गलती हुई थी उसके अंदर, तेरे संग के अंदर। Wow, wow. I was very impressed with that entire dialogue. Thank you, Really, thank you big so hand much. for you. The last two questions, because I know a lot of us are on a clock at this point. Sir, आप उड़ गए तो आप पूछ लीजिए सवाल. हाय, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल तेजस आपसे रहेगा। ये जो फिल्म है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आइडिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है आपका इस फिल्म को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके? पर्सनल एक्सपीरियंस तो हर किसी का होता है आई थिंक, वो यहाँ तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिल्म की शुरुआत तो वहीं हुई थी जब एक बहुत अच्छी कहानी संचित और प्रियदर्शी लेकर आए थे, हम लोगों ने डिस्कस की और मुझे लगा ये कहानी बहुत अच्छी है, सबके साथ बांटनी चाहिए और इसमें एक ह्यूमर छुपा हुआ है। इनफैक्ट ह्यूमर के अंदर हम अपनी कहानी बता रहे हैं, तो मुझे लगा ये बताने की ज़रूरत भी है और बताने में मज़ा भी आएगा, लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा। तो यही है, फिल्म बनाने की जर्नी यहीं से शुरू हुई और फिर जब RSVP पहुंचा और जब रॉनी सर ने कहा कि लेट्स मेक दिस फिल्म, आई थिंक देन बन गई फिल्म। रकुल, एक सवाल आपसे भी रहेगा। ये लास्ट दो सवाल आप ही पूछेंगे? पूछ ही लेते हैं। ओके, डन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रकुल, फिल्म में कंपल्सरी एंड ऑप्शनल का नाम लिया गया है, तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ रही है जब लोग कहते हो कि आपके लिए ऑप्शनल है बट आपने उसे कंपल्सरी माना हो? मेरे लिए क्या, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? कोई ऐसी चीज़ जो लोग आपके लिए बोलते हो ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ दो, बट आपने उसे कंपल्सरी मान के उस पर काम किया हो? हाँ, लाइफ में मेरा पूरा सिलेबस, जितना मेरा पढ़ाई का सिलेबस होता था, जब बोलते थे कि ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना, मैं फिर भी इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि मैं सब पढ़ के जाती थी कि मैं सब कंपल्सरी लर्न करके जाऊंगी, कुछ भी आ सकता है। Are we doing more? Hey, we can't do now cheating, no? We have to like stop question answers. But, sir, please, can I ask one question? मेरा हक बनता है सर, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रही हूँ. Please, I love you too. Ronnie, I have to ask you a question. The idea of having a platform like ZEE5 for you, why is it important? Actually, my personal experience with Zee, Manish, goes back 31 years to 1991. Oh my God, yes! Yep. We watched those shows! So, Saab CD, and from those days onwards is where it started. And I think Zee in India represents simplicity, mass communication, and ability to reach out to audiences everywhere and in every language. And I think for a film like this, which is a very simple story and very entertaining, we can't think of a better platform for that. Wonderfully answered. Thank you so much, all of you. Thank you for giving us